Hi, everyone. Welcome to our ninth session of the Amal Stories Alumni Connect series. I am Adnan Tariq, and I am excited to be with you again today as we come together to hear another inspiring story from our another amazing alumni. What I love most about these sessions is the sense of community that we build. And each story connects us, teaches us something new, and reminds us the power of our shared experiences. So let's get comfortable, open our minds, and enjoy this time together. And without further ado, it's my pleasure to introduce today's guest, Sobia Shahzadi. Thank you so much for being here with us. And to start, could you please tell us a bit about your background and what has brought you to where you are today? Assalamu alaikum, Adnan. How are you? I'm great. Thank you so much. So, thank you so much, first of all, for inviting me. It always feels great to be a part of the Amal alumni because, to be very honest, whenever you guys invited me, it's like I'm always overwhelmed. So, thank you so much. And to be very honest, I'm having a feeling of like, यार, कि बहुत सदियां और बहुत जमाने गुजर गए because I was a part of, I still remember third batch when Benji and Hajra and Mariam was working over there in Punjab University. So yes, Alhamdulillah, it's good to see now from third batch to hundred of batches you guys have completed. So congratulations first of all, and thank you so much for having me. As far as regarding my brief introduction is concerned, currently I'm working as an HR manager at Speaker Private Limited, formerly known as Unite Private Limited. So yes, my whole experience is all about HR and HR business partner, HR VP. I started back in 2015 August, and mashallah, it's 9 years. So yes, being a very strong part of HR community in Pakistan, mashallah. That's awesome. And thank you so much, Sobia, again. So let's dive deeper into the discussion, and I'm going to start off with the point that you have shared. Like you're working in this HR role for quite some time, and you have a lot of experience. So, Sobia, where did this journey begin? Or if I rephrase my question, what do you think was Okay, so for me, I won't say कि मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मुझे HR की फील्ड में आना है. No, it wasn't like that. Because the starting point was when I realized during my graduation I was actually working as a radio jockey on one of the international famous standard radio show live. So when I started connecting, मुझे हमेशा से बोलने का बहुत ज्यादा शौक था कि मैं ज्यादा बोलूं, लोगों के साथ कनेक्ट करूं और लोगों के प्रॉब्लम्स को जो है वो रिजॉल्व करूं. देन देयर वाज अ पॉइंट इन माय सिक्स्थ सेमेस्टर, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग यार कि मैं लोगों के साथ कनेक्ट कर लेती हूँ. माय टीचर्स एंड प्रोफेसर्स वर यूज्ड टू से कि सोबिया यू स्पीक अ लॉट, ठीक है, सो यू शुड चूज अ फील्ड जहाँ पे आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सको. सो इनिशियली मैं जाना चाहती थी होटल मैनेजमेंट में, एंड आई ऑलवेज परसू के यार मैं कोथम से जो है वो होटल मैनेजमेंट करूँ फॉर माय मास्टर्स. But due to some reasons, our university didn't like allow us to choose the subject of hotel management. Then I had three options: one for marketing, one for finance, and one for HR. So I was not very good in numbers. I'm very bad. So यहाँ पे काफी सारे लोग हैं वो कहते हैं कि यार तुम्हें डेट्स वगैरह तो बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं. So why you are not good in numbers? So there is a huge difference. क्योंकि मैं अब एचआर में हूँ तो एचआर का काम होता है चीजों को याद रखना, तो उस हिसाब से मुझे डेट्स वगैरह अपने एम्प्लॉयज की याद रहती हैं, वरना अदरवाइज मुझे याद नहीं रहती. So then what I thought कि यार मैं लोगों के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ. So I guess कि HR इज द फील्ड जहाँ पे मैं डे टू डे इंटरेक्शन में लोगों के मसले सॉल्व कर सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ, एंड आई बी इजी टू गो पर्सन फॉर एवरीबडी. But at that time, like back in 2014, it was very new field in Pakistan because आपके जितने भी बड़े स्टार्टअप्स हैं, वेल डेवलप्ड कंपनीज हैं, वहां पर सिर्फ ये चीजें परसू की जा रही थी कि वहां पर एचआर होता था. बट इन पाकिस्तान छोटी कंपनीज में किसी को आइडिया भी नहीं था कि व्हाट एग्जैक्टली द एचआर इज. सो बहुत चैलेंजिंग था वहां पे कि एक ऐसी फील्ड को चूज करना, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर से बढ़ते हुए, कि आप किस तरह से इसको प्रोसेस करेंगे. So, but I took that challenge कि नहीं, लोगों के साथ connect करना है, so I need to get out of my comfort zone. So that is why I choose HR because to be very honest, it's been 9 years, माशाल्लाह. अभी कल की ही बात लगती है कि ग्रेजुएट हुए थे और करियर स्टार्ट किया था.
बट वहां पे जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मुझे लोगों के बारे में लगती है, फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू स्ट्रेटेजी प्लानिंग। आप रिक्रूटमेंट करते हो, यू आर द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ पर्सन फॉर एवरीबडी आउट देयर, राइट? सो आपकी कंपनी में किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, यू हैव टू प्लान टीम एंगेजमेंट एक्टिविटीज, यू हैव टू प्लान सम स्ट्रेटेजिक मूव। everybody is looking up to you that there is someone, ठीक है, the HR, like हम मैनेजमेंट को हम प्रोसेस नहीं कर सकते, हम मैनेजमेंट के पास जाके बात नहीं कर सकते, so there is someone के जो जाके बात कर सकता है। एंड यहाँ मैं एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगी कि HR इज नॉट अ वेरी गुड पर्सन इन एवरी पर्सन बोथ, बिकॉज HR इज हिटलर। But yes, when I started, मुझे आइडिया नहीं था कि what challenges I am going to face in this like my whole field. Um, but as we say कि HR ह्यूमन रिसोर्स, तो जहाँ पे दो ह्यूमन रिसोर्स कनेक्ट करता है वहाँ इश्यूज तो डेफिनेटली होता है। तो बट यस, इट इज वेरी अडेप्टेबल फील्ड, जहाँ पे आप बहुत सारे डिफरेंट लोगों के साथ अडेप्टेबल अप्रोचेस को यूज करते हुए आप काफी सारी चीजें कर रहे होते हो। एवरी फील्ड हैज इट्स प्रोस एंड कॉन्स, राइट? सो अगर मैं एचआर के कॉन्स की बात करूँ तो एचआर इज अ फील्ड जो कि अप्रिशिएटिव नहीं है। This is one of the, like, might be, this is just in Pakistan because across the board I have few very good friends of mine who are working as an HR professionals over there. तो उनके यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन शायद अभी बहुत टाइम लगेगा, और वहां पे कहीं ना कहीं एचआर का रोल भी आ जाता है कि वो खुद को कितना इस काबिल बनाते हैं कि उनको अप्रिशिएट किया जाए। एंड एज पर एज आई कंसर्न अबाउट दिस रोल, मैंने 3 ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक काम किया है एज एन एच आर पीपी। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट अदनान, बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरी कम्युनिटी में मुझसे इख्तलाफ करते हैं इस बात के ऊपर कि मैं शायद बहुत ज्यादा फेक बात करती हूँ कि नहीं एचआर को अप्रिशिएट किया जाता है एंड ऑल दैट, बट नो, आई वुड से आई हैव worked in 3 different companies, or alhamdulillah, I always being appraised in my 3 companies. And the reason being is that I'm not that kind of typical HR who is being very authoritative. कि आप उससे बात नहीं कर सकते, because when I still remember my first job when I started back in 2015. So मेरा जो खुद से promise था एक वो ये था कि I don't want to be a typical HR जो कि authoritative हो, because it's a people job. You need to be kind, you don't need to be nice. This is what I believe. So I'm easy to go person with the people, like if someone is coming even in a very hyper tone, or I had a lot of stories in this regard, जहाँ पे लोग जो है उनको लगता है कि सिर्फ एचआर की सुपारी देना रह गया। एचआर जो है वो ऑफिस से बाहर निकले और हम उसको उठा ले, कि सब कुछ हमारे साथ एचआर कर रहा होता है। बट आई एम वेरी गुड टू गो पर्सन कि मैं लोगों की बात सुनती हूँ, लोगों की बात अंडरस्टैंड करती हूँ। सो आई ऑलवेज हैव माई सेल्फ एज अ ब्रिज, नॉट एज अ पर्सन कि मैं एक एम्प्लॉय की बात सुनूंगी और मैं वहां पे जाके उसको थोड़ा सा 4 बातें एडअप करके और मैं मैनेजमेंट को बताऊंगी। नो, आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन। आई एम बेसिकली अ वॉल, जहाँ पे मैं एम्प्लॉयज को मैनेजमेंट की अच्छी साइड दिखाती हूँ, ठीक है, और मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज की अच्छी साइड दिखाती हूँ। सो इट गोज बोथ वेज। So after even 9 years of experience, I had a very good bond with every management and the employees I had. They always contact me कि like we are stuck now, तो हमें क्या करना चाहिए। So yes, I do say कि it's all on us as an HR कि हम किस तरह की community basically build करना चाह रहे हैं और किस तरह के relationship हम अपनी टीम के साथ बिल्ड करना चाह रहे हैं। So when you have that can do and flexible attitude, so I guess कि this is very easy to go with the people. So no matter what the field is, तो आप उस फील्ड को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आप एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से आप उसको बहुत अच्छे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में लेकर जा सकते हैं। तो यस, इट वाजंट माय ड्रीम जॉब, बट द टाइटल दैट आई नीड टू कनेक्ट विद द पीपल। तो यस, 9 years पास्ट एंड लाइक जैसे मैंने कहा कि कल की बात लगती है, आई डोंट फील लाइक इट कि यार मतलब मैं इतनी पुरानी हूँ। बिकॉज मैं जब भी किसी से बात करती हूँ कि लाइक यार आई हैव 9 years ऑफ एक्सपीरियंस, सो एंड दे से नो, नो, वी फील लाइक इट कि अभी तो आप इंडस्ट्री में 2-3 साल से आई होंगी। तो यस, इट ऑलवेज गुड टू टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस एज एन एचआर एंड द चैलेंजेस वी फेस। So alhamdulillah, I am enjoying basically whatever I am doing right now, because I do feel and I have a strong faith that I am making a very good impact in my company, and as well as the community, like in the IT sector.
because I am a person who, if you don't know me, you can still approach me, and I won't say no to you because I always be available for the help whenever you need me. So yes. I think that's the real essence of the HR, like being there for the people and for the employees, of course, and working with them to support them in the best possible manner. And I really liked the way you summed up your whole journey and establishing the fact that starting from recruitment to strategic planning, you are the one who is facilitating the whole process. So, and I think you have touched upon a lot of things in this like intro of sorts. But I would love to ask you, Sobia, that if you have to pick one thing that really excites you about this job, then what is it? Communication, to be very honest. Mm-hmm. Because HR is all about communication, okay, and your listening skills, right? Because if there are employees, I have to communicate. If there's a management, I have to communicate. If there's a candidate, I have to communicate. So for me, communication is the key, and the soft communication, obviously, as well. Because we as an HR, no matter what is going on in our life, चाहे मतलब जो भी चल रहा हो, we always have to smile, right? We always have to please people with a smile. Oh, okay, no, it's fine. ठीक है? Come on, like let's move on. ठीक है? Let's figure it out because and this is something जो कि आप सिर्फ communication से कर सकते हो. If HR is not having a communication skills, to be very honest, you cannot pursue this career. Because when it comes to the communication, जिस तरह हमने recruitment और strategic planning की बात की, everywhere you need communication, right? So, because when you are building a culture is not something that you are providing extra snacks, you are providing extra holidays. This is all about how important you feel your team is, right? और वो आप कैसे फील करते हो कम्युनिकेशन से, राइट? आपकी वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी रिटन कम्युनिकेशन, यू नीड टू बी वेरी एक्सप्रेसिव. सो जब आप एक्सप्रेसिव होने की बात करते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको कम्युनिकेट करना, राइट? सो आई एम अ वेरी एक्सप्रेसिव पर्सन. मुझे छोटे छोटे जेस्चर्स हों, ठीक है, मुझे उसको सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है, ठीक है. अगर एक एम्प्लॉय ने एक छोटी सी कोई चीज विन की है, for them or for the whole company, might be it is just a little bit milestone, but for me this is a very huge achievement. So I Yeah. always communicate wholeheartedly. Oh, great, you have done a great job, dude. Okay, come on, okay, let's celebrate and do that, right? So for me, yes, communication is one of the best part, because from culture building to the strategic planning to the company growth to make yourself and your company as a brand, okay, what you need, you just need communication. Mhm. That's it. Simple, easy, and consistent communication. Yes, That's awesome. Communication is the key and something that really excites you about your job. And so we are exactly. definitely, when you're working in this role that involves developing connections, connecting with a lot of people, definitely there are some challenges as well. So Yes. if you would like to share any challenges with us. To be very honest, Adnan, when I started my career as an HR, I still remember, I won't say it, कि, even after having 9 years of your diverse experience, मुझे challenges face नहीं करने पड़े, then I'll be lying, to be very honest. So there were ups and downs, obviously. But one of the major challenge which I have seen throughout my career, like I have changed, I have moved myself from non-IT to IT, right? One of the major challenge which I felt and which I faced, that was to work under the male dominating society, right? Because हम इक्वालिटी की बहुत बात करते हैं, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू द लीडिंग पोजीशंस जहाँ पे एक फीमेल लीड करी होती है, ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली हम जिस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में काम करें वहाँ पे एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होती है, राइट? सो मेरी पहली जॉब हो या मेरी सेकंड जॉब हो, ठीक है, आई फेल्ट दैट वे, कि वहाँ पे खुद को मनवाना एक बहुत बड़ा फैक्टर था. So yes, एक तो one of this was one of the major challenge. Second challenge which I always face for, I'm a kind of person who will never say yes. मतलब you will feel like it awkward, but yes, I am that kind of person.
Because to be very honest, I believe कि we are human, right? जब आप इंसान होते हैं, ठीक है, तो अल्लाह ने आपके अंदर शऊर रखा है। जब आप पढ़ लिख के किसी जॉब में आते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करने की आदत होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। इफ यू आर सेइंग समथिंग टू मी, रादर टू से यस ओके आई डू इट, नो, ठीक है, आई शुड बी अ पर्सन जो वहां पे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आपसे बात कर सके। नो सर, लुक यू आर रॉन्ग, ठीक है, एंड वी कैन डू दिस इन दिस वे, राइट? सो ये ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। आई स्टिल रिमेम्बर माई फर्स्ट इंटरव्यू। मेरे फाइनल पेपर्स के बाद आई स्टार्टेड माई जॉब हैविंग नो एक्सपीरियंस, नो इंटर्नशिप, नथिंग, राइट? There were around 10 people sitting out there in front of me, ठीक है, a new person who doesn't know anything, right? So वहाँ पे I still remember my first CEO who asked me कि what if कि हम आपको एक बात कहें, ठीक है, कि आपको ये करनी है no matter what, ठीक है। I said without even thinking the consequences कि corporate sector का तो मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। I said I'll say no। अगर मुझे चीज लगती है, ठीक है, कि ये सही नहीं है फॉर मी, फॉर द कंपनी, ठीक है, आई विल डेफिनेटली से नो, ठीक है। एंड this was a thing he hired me with no experience. And I still remember against me for the final interview there were two other girls जो कि 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, एक दुबई से आई थी और एक 3.5 साल के एक्सपीरियंस के साथ सेम सेक्टर से आई थी। And he just hired me for that mindset and for the attitude that I'm not pursuing a career for the sake of money. I am pursuing a career for the sake of to make an impact in the company, in my own life and in the life of the other people, right? So yes, this was a major challenge, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, ठीक है। सो नाउ दे कंसीडर इट कि नहीं, मतलब आई एम ऑन अ राइट ट्रैक, कि आपको हमेशा यस बॉस नहीं करते रहना चाहिए, ये आपका काम होना चाहिए जो कि बोलता है, ठीक है। सो ये दो एक बहुत मेजर फैक्टर थे, ठीक है, जो कि मैंने चेंज किया और इसी से फिर मैं डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई। बिकॉज व्हेन यू ओवरकम, राइट, व्हेन यू नो वेयर यू आर राइट एंड वेयर यू आर रॉन्ग, ठीक है, तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी आपको कंसिडर करती है। So they always cater me like that. Ki, no, if she is saying something, ठीक है, we need to listen her because she must not be saying on like hypothetical ground. She must have the that background. So these were the challenges और मैंने इसको इसी तरह से overcome किया कि अगर मैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की बात करूँ या इंडस्ट्री की बात करूँ, I still remember my first job और वहाँ पे there was a meeting and I was under the probation period. तो हम लोग एक सीनियर मैनेजमेंट की मीटिंग कर रहे थे और one of my very senior colleagues said like he was above 65, so he said कि हम इसकी क्यों सुने, ठीक है, ये 22 साल की बच्ची आके हमें ये बताएगी कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना, राइट? एंड आई जस्ट सेड कि नहीं सर, मतलब मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, लेट्स वर्क टुगेदर, ठीक है, हम मिलके काम करते हैं, ठीक है, और हम एक प्लान वे आउट करते हैं, ठीक है, एक रोड मैप बनाते हैं कि किस तरह से हम चीजों को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। सो एंड सेम गोस फॉर माय सेकंड कि वहां पे आई हैड अ वेरी सीरियस कॉन्फ्लिक्ट विद अपर मैनेजमेंट के दे वर यूज टू से कि मतलब ये तो नॉन आईटी से आई है, ठीक है, हम इसकी क्यों सुने, इसको नहीं पता कि मतलब किस तरह से चीजें चलती हैं। And I genuinely respect my ex CEO. He always said कि it does not matter कि वो non IT से आई है because the work she has done, getting out of the comfort zone, ठीक है, and the progress she has shown me in 1 month, ठीक है, you never did that, right? So definitely I'm gonna listen to her. आज आप उससे बात करो, ठीक है, तो you won't say it कि ये non technical background से आई है, ठीक है। So I always believe in one thing कि यार go extra miles, go out of your comfort zone, ठीक है, if you want to excel in your career. So मैंने इस तरह से इन challenges को जो है, दो major challenges, obviously when you're working तो बहुत ज्यादा conflict के challenges आते हैं, ठीक है, कुछ बहुत फेयर होते हैं, लेकिन आई गेस कि एज एन एचआर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये दो मेजर चैलेंजेस थे जिसको मैंने ओवर द पीरियड बहुत बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम किया है, ठीक है, कि मतलब अगर अगर आज मैं पीछे मुड़ के देखूं कि शायद मैं ये चीज बेहतर कर सकती थी, तो आई वुड से नो। क्योंकि अगर मैं उसको ज्यादा परफेक्ट करने की कोशिश करती तो शायद मैं एक रोबोट होती आज, ठीक है, जो कि मैं नहीं हूँ। सो यस, दीज वर द मेजर चैलेंजेस। I'm really glad to hear, Sobia, that
you were able to establish a narrative of working together in a male dominant society, and you were able to pave your way through that based on your skills, on your expertise. And mashallah, really happy to see where you are right now, Thank you so much. where you are able to even talk about your accomplishments and share these incidents as a source of learning for all of us. So I'm going to take our conversation a bit forward. Like, let's dive into some tips that you might have for our alumni as well, and all the people who are watching this conversation. So you know that professional development is equally important along with the Yes, academic qualifications that we acquire. exactly. So firstly, I would like to know that, okay, what were the steps that you took for your professional development that helped you to reach where you are right now? Okay, so first of all, I would say कि I always preferred कि मैं चीज़ों को अनलर्न करूँ, ठीक है, और न्यू चीज़ों को लर्न करूँ, because this mindset is very important, right? अ, आप किसी भी बैकवर्ड चीज़ को, अगर मैं ये कहूँ कि 5 साल पहले एक चीज़ चल रही थी, ठीक है, और अभी भी वही चीज़ चलेगी, तो इट्स नॉट द केस, राइट? तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि मैं इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लेटेस्ट ट्रेंड को देखती हूँ, परस्यू करती हूँ, ठीक है। अक्रॉस द बोर्ड आई हैव वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन जो कि इंटरनेशनली लाइक एशिया में, इंडिया में और यूएस में काम कर रहे हैं, ठीक है। आई ऑलवेज लर्न फ्रॉम देम। मैं अगर किसी चीज़ पर स्टक होती हूँ, सो आई ऑलवेज हैव सेकंड ओपिनियन फ्रॉम देम कि व्हाट यू गाइस आर डूइंग ओवर देयर, राइट? सो वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और एक लोकल स्टैंडर्ड, मैं दोनों को साथ लेकर चलती हूँ, ठीक है। आई हैव डन माय सर्टिफिकेशन लाइक इन एचआर सीएचआरएमपी लास्ट ईयर। सो दैट वाज द बोल्ड स्टेप कि मैं थोड़ा-सा अब प्रोफेशनल ग्राउंड्स को और सीखना चाह रही थी, ठीक है। देन आई एम यूज्ड टू अटेंड द वेबिनार्स। ऑनलाइन इंटरनेशनली बहुत सारे लिंक्डइन पे ऐसे वेबिनार्स होते हैं जिसके ऊपर आपको वो एक तो इंडस्ट्री ट्रेंड और दूसरा आपकी सॉफ्ट स्किल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन कि आप रिक्रूटमेंट का लेना चाह रहे हो, आप ऑपरेशंस का लेना चाह रहे हो, आप बिजनेस पार्टनरशिप का लेना चाह रहे हो, और यू आर गोइंग टू हैव द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पार्ट, राइट? सो आई प्रेफर दोज वेबिनार्स एज वेल, बिकॉज वहाँ पे इंडस्ट्री के और इंटरनेशनली बहुत टॉप स्टैंडर्ड के लोग होते हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आई ऑलवेज टुक शॉर्ट कोर्सेज, देन आई गो फॉर द इवेंट्स। I go for the very choosy events, to be very honest, because मैं सिर्फ उन इवेंट्स को चूज करती हूँ जो कि आई फील लाइक इट के प्रोडक्टिव है, जहां से मैं अगर 2 घंटे के बाद वापस आ रही हूँ, सो देयर मस्ट बी समथिंग इन बैक ऑफ माई माइंड कि यार मैंने आज ये सीखा है, ठीक है। सो मैं कम इवेंट्स अटेंड करती हूँ, लेकिन जो अटेंड करती हूँ, ठीक है, वो इतने वर्दी होते हैं कि वो मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड ज्वाइन अमल इन 2014 इन बैच 3, सो वहाँ पे दैट वाज इन माय माइंड बिकॉज़ आई वाज इन द फाइनल सेमेस्टर के लर्निंग पर्सपेक्टिव में अगर आपको बाहर निकलना है, ठीक है, यू नीड टू डू अदर देन योर ओन एजुकेशन, राइट? आप मास्टर्स कर लेते हो, ठीक है, आप स्टक हो जाते हो, ठीक है, दीज आर द डिग्रीज, बट गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है, आपको प्रैक्टिकली सीखने की जरूरत होती है चीजों से, ठीक है। और आई गेस कि वो आपको नेटवर्किंग से आता है, ठीक है। और जो दूसरी चीज है, ठीक है, वो आपको ज्यादा से ज्यादा लेटेस्ट ट्रेंड्स और आर्टिकल्स पढ़ के जो है वो चीज आती है। लिंक्डइन इज दैट प्लेस कि जहाँ पे क्रॉस द बोर्ड आप बहुत सारी चीजों को देखते हैं और आप बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं। सो फॉर मी फ्रॉम पास्ट 6 मंथ्स अगर मैं बात करूँ, सो आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम द लिंक्डइन। सो बिकॉज दैट इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप बहुत कुछ सीखते हो और इन रिटर्न आप अप्लाई करते हो, ठीक है। फॉर दैट यू डोंट हैव टू वेट कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज हो रही होगी तो यू डू दैट, नो, ठीक है। आप वहाँ पे खुद एक कोर्स ऑफ एक्शन बन सकते हैं कि आप वहाँ से लोगों को सिखाते हैं, जस्ट लाइक आई वुड से कि अमल सिखा रहे हैं, राइट? तो आप वो वाली अप्रोच अपनी प्रैक्टिकली भी लेकर चल सकते हैं, ठीक है, और बाय जस्ट गोइंग एक्स्ट्रा माइल्स, आई मस्ट से। Yeah, really valuable insights that learning is a process that should एग्जैक्टली। keep on going, ongoing, right? And really like that you brought up the points that attending webinar help a lot in in your overall professional development. So Bia, can you give
Yeah, I'm back. I hope you are able to catch me now. Yes, 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 Yeah, yes. so we were talking about webinars and short courses and events. So can you share one course or one event or webinar that you attended and that was helpful for you in your, professional life or any played a very pivotal role in your career? Okay, so I remember last year there was a webinar from the Microsoft और वहाँ पे एक leadership role में थे Michael. So he started a webinar on the leadership and strategic planning. So that was something कि उससे पहले मैं HR BP कर जरूर रही थी बहुत सारे perspective में I was involved in so many things other than the HR because I was the HR BP. When I took that webinar, ठीक है, that changed my whole perspective. So about the leadership and about the strategic planning. So I would say ki, like it's I guess it is like about a mid of July 2023. So after 1 year, I have improved myself a lot when it comes to the decision making regarding the leadership or when it comes to the decision making regarding the strategic planning for the employees or for the betterment of the company. So that was a webinar. I would say it changed my whole perspective. Whatever I was carried for past 1 year, that changed overnight. So yes, this was one of the major. Apart from it, I have taken a lot of webinars from Saudia. There is a girl NS, और वो जो है वो हमेशा रिक्रूटमेंट के ऊपर बात करती हैं, वो हमेशा Hmm. आपकी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बात करती हैं, ठीक है। सो आपको बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं, ठीक है। Hmm. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इज देयर इज अ पर्सन हु इज हैविंग अ पॉडकास्ट स्टीवन, आई गेस आपको उनका आइडिया होगा, द डायरी ऑफ द सीईओ, ठीक है। If you want to know about the mindset of the entrepreneur, right, you just need to watch that guy's podcast and you will feel a whole change in your perspective because Hmm. वहां पे बहुत सारे सीईओज आते हैं, ठीक है, और वो बात करते हैं बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव में जो कि हम लोकली जिन चीजों को नहीं लेकर चल रहे होते, ठीक है। और एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट सेइंग कि हम सिर्फ उसको सुनते हैं। इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हम वहां से सुनते थे और हम चीजों को इम्प्लीमेंट करते थे इन आवर ओन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो एक बहुत ज्यादा डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है बिकॉज नाउ दिस इज द इरा ऑफ पॉडकास्ट, राइट। तो वहां पे आपको प्रोडक्टिव लोगों को सुने, आई मस्ट से listen to only those people, ठीक है, who have already make an impact in the industry, right? Not like a who just came like for 1 to 2 years, because आप उनको सुनेंगे वो अपना एक बहुत माइनर आपको ओवरव्यू देंगे, क्योंकि आप जितना ज्यादा अपनी फील्ड में होते हैं उतना ज्यादा आप डीपली बात कर सकते हैं, राइट। उतने ज्यादा आप क्यूरीज के आंसर कर सकते हैं। तो इस वजह से आई वुड प्रेफर के एंड आई वुड सजेस्ट कि आपको इनको सुनना चाहिए, जितने भी हमारे अलमनाइज या अभी जितने भी यंग सुन रहे हैं या जितने भी हमारे एचआर प्रोफेशनल सुन रहे हैं अभी हमें, तो आई वुड सजेस्ट कि उनको इन चीजों की तरफ लेकर जाना चाहिए और बेबी स्टेप लेते हुए, ठीक है, उनको ये चीजें इम्प्लीमेंट भी करना स्टार्ट करनी चाहिए। I think so. Yeah, those great recommendations as well. And that brings me to the most important point that if someone wants to work in similar roles like you are working in this HR field, then what they should be doing, learning, thinking. Okay, so I believe, Adnan, with reference to my experiences, and because I have worked with different HRs under me, working under me, whom I have supervised, and obviously I am used to go on to the event, so I know how the industry is evolving, right? So there are few things I would suggest कि जो HRs इसमें हैं already, जो career के start में हैं या जो इस profession को लेना चाह रहे हैं, ठीक है, उनको कुछ की एडवाइजेस मैं देना चाहूंगी जो उनको करने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टे लॉयल टू योर सेल्फ, राइट। आई हैव सीन इन एचआर इंडस्ट्री लोग क्या करते हैं कि लोगों ने डिग्री ले ली, ठीक है, लोगों को अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिल रही, दे दे आर यूज टू थिंक कि एचआर इज वेरी इजी टू गो जॉब, ठीक है, एचआर तो हलवा है, ठीक है, और एचआर हो जाएगा। ऐसा नहीं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, if you're stepping into the HR field, ठीक है, take it seriously. Do not take it if you are just entering into the field. Okay, for example, if I talk about the recruiters, I know without quoting the name, a lot of recruiters in my own industry, कि वो HR background से नहीं है, and whenever I ask them कि why you joined, why you didn't choose your own field, they said क्योंकि इसमें पैसा बहुत, right?
एंड अगर हम उनके साथ कोई इंटरव्यू कॉल कर लें, ठीक है, सो दे जस्ट डिसअपॉइंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, बट दिस इज द थिंग आई एम टेलिंग कि हमारी यूथ को एग्जैक्टली नहीं पता कि व्हाट दे आर अप टू, व्हाट दे शुड सपोज टू डू। दे आर जस्ट लाइक कि इसमें पैसा बहुत है तो चले जाना चाहिए। नो, व्हेन यू आर इवन अर्निंग मनी, ठीक है, तो आपने इन रिटर्न भी तो कुछ करना है ना, ठीक है। whatever the field you are taking, take it seriously, even if you are not having a background of HR, ठीक है, and you want to get into it with a proper knowledge, ठीक है। recruitment, HR, it's not like a hiring firing, ठीक है, it is more than that now, ठीक है, because we are evolving. Second most important thing is unlearn your previous stuff and learn the new things. जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ केस कि 5 साल पहले अगर एक चीज चल रही थी वो 9 साल के बाद भी चलेगी। नो, आई हैव टू चेंज माई माइंड सेट, आई हैव टू इवॉल्व विद द इंडस्ट्री। अगर हम आज बात करें, सो ए आई इज एवरीवेयर, राइट? If you are not familiar with the AI, it means you are missing the trend, right? So you need to get familiar what is trending, और आपको वो सीखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, एआई आने के बाद डाटा एनालिटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा एचआर के लिए परसुएसिव हो गया, राइट? आई डिडंट गेट अ चांस टू डू इट लास्ट ईयर, नाउ आई एम प्लानिंग टू डू दिस ईयर, राइट? Because that's not something only benefit my organization, but that will benefit my perspective as an HR, कि अब एचआर थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक रोल से निकल के अब डेटा एनालिटिक्स की तरफ आ रहा है, जहां पे आप नंबर्स में प्ले करते हो, राइट? सो आप अपनी फील्ड में एज एन एचआर, ठीक है, आप देखो कि ट्रेंड में क्या है, ठीक है, अब वो करो। गो फॉर द नेटवर्किंग, बट गो फॉर द पॉजिटिव नेटवर्किंग, ठीक है। use LinkedIn as in your learning tool. Use LinkedIn as in your growth tool set, right? Everybody is not familiar कि वो CHRMP करे जाके, SHRMP करे जाके, ठीक है, because those are very pretty expensive things, right? बट लिंक्डइन इज समथिंग कि वहां पे आप अपने फेलो के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आप ग्लोबली लोगों के साथ कनेक्ट करो। My personal approach is I always prefer to network with the HR professionals who are from US and who are from India, okay, who are from like Sobia. The reason, this is not the reason कि पाकिस्तान में अच्छे HRs नहीं है, ठीक है। I have been into it. मोहसिन निशात साहब, he is my ideal, to be very honest. He is just my ideal, ठीक है। I am stuck on something, he is just right a call away, ठीक है, कि मतलब किस तरह से चीजें आपने प्रोसेस करनी है। सो इस तरह के लोगों के साथ कनेक्ट करें, ठीक है, जिनको 20-25 साल हो गए, ठीक है, जो आपको गलत गाइड नहीं करेंगे। और बिफोर हेडिंग इनटू एनीथिंग, ठीक है, ऑलवेज टेक एडवाइस। डू नॉट गो ऑन टू इट कि यार मुझे ये बंदा नहीं पसंद ना, तो मैं इसके खिलाफ पॉलिटिक्स करके इस बंदे को निकलवाऊंगा। नहीं, डोंट डू दैट। दिस इज नॉट द रोल ऑफ, दिस इज नॉट द रोल ऑफ एचआर, राइट? एचआर इज मोर देन दैट, so we need to go into that perspective. So I guess these three advices are more than enough. If everybody think into the deeper level, I guess they can do wonders in their own field. Thank you so much, Sobia. I think these are some really valuable insights, and coming from you, um, someone who's coming, sharing all of this from a place of experience, that even makes them even more relevant. So, with that, I just have my final comment that uh, you are going to be, or you are the best HR and organization that can ever have, because the kind of expertise, the support that you are providing to your community. I think that's great, and you're doing an amazing job. Congratulations on achieving that. Thank you so much, Adnan. Thank you so much. It means a lot. It means a lot. Right. So with that, Sobia, I'd like to wrap up the conversation. Thank you so much for joining us today, and a powerful reminder of the strength that comes from the power of perseverance and even staying true to the goals. So, the insights that you shared today, the narrative that you shared, like working together with in a society that is male dominant and breaking those stereotypes. I think that is super powerful, and we are really conveying a message like this to our community that will, that is going to value it a lot. So I look
anything that you would like to add at the end? I would just say, Adnan, from this platform, there are just few things I would like to say to everybody and to the Amal alumni as well, because I was among those who started with Benji, Hajra, and Mariam. So I know their like mindset and whatever the reasons were when they started in Pakistan. And Alhamdulillah, you guys are like making it so proud कि अमल जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह. So I would just say some advices to the Amal fellows: take this platform very seriously. To be very honest, very seriously, because when it comes to the soft skills, Amal is the only one platform in Pakistan, ठीक है, जो कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है, ठीक है. डू नॉट मेक इट लाइक आपने सब सर्टिफिकेशन कर ली, ठीक है, सो इट विल गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर सीवी. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. You need to prove yourself कि आपने वाकई चीजें सीखी हैं. So take this platform very seriously, work on it, work hard on it when you are working with Amal, because ultimately it will be leading Hmm. towards your dream job. So this is my advice to the Amal alumni and to everybody who is still working with Amal. And one advice to the whole community: yeah, just be kind. Just be kind to yourself and just be kind to the people around you. You don't need to be nice. You need to be kind. ठीक है, हम लोग ना इन दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं, ठीक है. So this is just my one liner advice. We are in a very we are in this era जहाँ पे हर बंदा परेशान है, ठीक है. Everybody is struggling just to meet the necessity of the life, ठीक है, जिसको रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, right? So just be kind, just be helpful and be empathetic, right? और empathy के ऊपर तो अमल जितना अच्छे से सिखाता है ना, I guess के कोई नहीं सिखाता, right? So yes, on closing note, just be kind, stay happy and stay positive, because optimism is very important and it can change everything. Trust me, it can change everything. Thank you, Sobia, for adding that. And this conversation that we had, it's in moments like these that we really see the value of community, learning from each other, supporting and growing together. So, as we close, I'd like to thank everyone on the Facebook who joined us for this conversation. And I'm looking forward to for joining in and have a wonderful evening. Thank you so much. Khuda Hafiz.